इन योर केस आप उनको मेकअप भी करवा रहे हैं, फोटोशूट करवा रहे हैं, पूरा ग्रूमिंग करवा रहे हैं, यानी और आपका खर्च बढ़ता जाता है। तो वी आर गोइंग टू रिकवर ऑल दिस। एक्चुअली कुछ हमारे साथ कॉर्पोरेट जुड़े हुए हैं जिनको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया है एंड दे आर गोइंग टू स्टार्टिंग तो 5-4 एडिशंस हैं वो हम लोग जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और उसके बाद तो वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने वैसे 3 साल के लिए हमसे कहा है, तो 4-5 कॉर्पोरेट्स हैं जिनका हमारे पास ऑफर है एंड दे विल सपोर्ट अस एंड वो जितना भी खर्चा है वहाँ से देन उसके बाद हम क्योंकि डिजिटलाइजेशन में भी जा रहे हैं एंड यू नो डिजिटल में इतना हमारे इसमें क्योंकि इसका विजुअल्स भी चलेगा यानी वीडियो प्रोफाइल्स भी आएंगे, जितना हमारे पास यूट्यूब पर गूगल पे और चीज़ें पर रनिंग होगी तो हमें अर्निंग्स वहाँ से भी होगी। सो दैट इज द प्लान एक्चुअली। सो अभी हम आर्टिस्ट से कुछ चार्ज नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली ये करते हैं लोग क्या ये पोर्टफोलियो कराइए हम आपसे इतना पैसा चार्ज करेंगे देन वी विल पब्लिश यू, सो वी आर नॉट गोइंग टू लाइक। सो उसमें एडवर्टीजमेंट से हमको कमाना है, डिस्ट्रीब्यूशन की बात तो ठीक है फ्री ऑफ कॉस्ट, बट इसका सब्सक्रिप्शन जाएगा कुछ जैसे फैशन इंस्टीट्यूट्स के अंदर सब्सक्रिप्शन दैट विल बी चार्जेबल। उसके अलावा हम कुछ अपार्टमेंट्स रहते हैं जैसे मेन सिटीज़ को कवर करेंगे उसका सब्सक्रिप्शन जाएगा, वहाँ से हमको सोर्स ऑफ अर्निंग। जिस आर्टिस्ट को आप फीचर करेंगे बोला सी के में कॉन्ट्रैक्ट भी करेंगे कि आपको कुछ काम मिलता है जितना परसेंटेज होगा ऐसा कुछ? जी हाँ बिल्कुल, इसमें हमारा क्योंकि किसी को भी अगर कोई पसंद आया तो हम लोग आर्टिस्ट से वो कॉन्ट्रैक्ट हमारी कंपनी को ही करेगा, देन वट एवर जो भी कॉन्ट्रैक्ट मिलता है 60% विल गो टू आर्टिस्ट एंड 40% टू ऑर्गेनाइजर्स। मिनीशा कैसा लगा खुद को कवर पर देखकर? सॉरी, कवर पर देखकर खुद अपनी तस्वीर देखकर कैसा महसूस किया? Well, I felt because the magazine is for a good cause, a very good platform. I did feel that yes, it was nice. It feels good. Everyone feels good to be on the cover of a magazine, so it always feels good. और दूसरा यहाँ पर नई टैलेंट आ रही है, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे, टिप देना चाहेंगे? I would just what I would like to say is this industry is very difficult. बहुत मुश्किल है यहाँ, कोई फॉर्मूला नहीं है हिट होने का। जब से फिल्म इंडस्ट्री शुरू हुई है आज तक ये आपको कोई नहीं बता सकता कि हिट फॉर्मूला क्या है। ये तकदीर की बात है, किस्मत की बात है, फिल्म की किस्मत की बात है, आपकी किस्मत की बात है। लेकिन थ्रू ऑल द अप्स एंड डाउन्स व्हाट आई वुड लाइक टू एडवाइस इज कीप योर सेल्फ बिलीफ, बिकॉज दैट सी जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है देन एवरीथिंग इज हंकी डोरी, लेकिन जब वक्त होता है जब चीजें ठीक नहीं चल रही हैं, आपका लो फेज हो रहा है, दैट इज व्हेन यू नीड टू कीप योर सेल्फ बिलीफ through the dark days, and that's the only thing I can advise. Minishaa, Jyoti Venkatesh here. Hi, how are you? It's been so long. Acha, after you made your debut in the film industry, within a very short time the digital era started. So what difference do you find from that era and the digital era today? Do you think more people are getting an opportunity to face the camera? See, the thing is that the digital era actually started much later. By the time the digital era started, if you see magazines, they were moving into the digital space, but people were not accessing it that much. The digital space really blew up when we started getting very high quality smartphones. You know, so that is when on the go people would read the news when you're in the car, when you're traveling, in your lunch break, when you have free time. So as you see, print media was there, but simultaneously they also started maintaining and acquiring a digital platform. But until you did see, and at that time an iPhone was someone only very people who could afford to pay that much would have it. It's only until brands like Oppo and Micromax and all these other brands came in, which priced their phones at a price where everyone can have a smartphone. When Reliance came in and said, you know what, we're going to give free data to everybody. You know, they had data plans that were so cheap. That is when the internet became accessible to everybody.
So that's when the boom happened, which I feel was phased, and the boom has happened now in the past 2-3, I feel, years. All this while it was a transition. Thank you, Minishaa. And this question is for the editor. You know, what is the print order you are planning of the magazine? And also, number 2 question, which you may not like if we ask, considering you are coming in India, people will not be able to even pronounce the title. So why don't you make it as Stars Today or something? But for that we have especially planned for, like, this is written ETOILES Today. So first of all we have decided to write in Hindi. It is ETOILES Today. So somebody else was asking me how you pronounce it. Is ETOILES Today? Or it was something like that. So then I said, एक छोटा सा बच्चा अगर उसको बोलो कि इतवार बोलो, इतवार, and he is a तोतला बच्चा, like, you know, so he will say इतवार. So just for learning this, and some I think I said कि मैम तो उनका नहीं, ये बहुत अच्छा तरीका है. But anyway, we are writing on this thing इतवार today because वो टंग अलग है वहाँ पर, लोग नहीं बोल पाएंगे, तो इसको ETOILES today बोलेंगे. So आप जिसको ETOILES बोलना है तो बोलेंगे, बिकॉज इंडिया में तो कई प्रोनाउंसिएशन यानी स्टेट वाइज भी बदल जाते हैं सारे. सो अभी हम इतना कर सकते हैं कि हम इसको हिंदी में नीचे लिखेंगे सो दैट कि वो सही प्रोनाउंस हो सके. So at least this will be an excuse now for the whole country to learn one new French word. And the print order, how much you are planning to come out? Yes, sir. Every issue, how many copies you will print? Copy will be starting from 50,000 starting. Then after that we'll increase. Actually we are planning for from 1 lakh actually. But starting this first issue will come from 50,000 only. Then after this increase. It's a very brave effort considering that most of the print publications are actually closing down now. They are closing down because, sir, this is a very new concept actually. So we want to distribute this in maximum number of people so that maximum artists could be approached to these production houses. And initially we have to invest actually. Then after that we will also earn, no doubt. But initially we are not earning from these artists and all. So initially we have planned for 2-3 years. Okay, we will invest, and after 3 years we will earn, no doubt. So Thank you. Thank you very much. Thank you so much. We are ready for Media Bites now. Thank you. Tell us your experience. What was the first election? We asked you to be on board for this. So मुझे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये बहुत कम होता है जहाँ पे नए लोग को अपॉर्चुनिटी मिलती है. एंड नॉट ओनली अपॉर्चुनिटी, हर कोई अपना, जैसे उन्होंने बोला, पोर्टफोलियो खींचता है, अपने पोर्टफोलियो पे इन्वेस्ट करता है, लेकिन उसके बाद टू गेट एक्सपोजर टू द राइट पीपल ताकि आपके पिक्चर्स इंडस्ट्री में सब लोग देखें. पीपल डोंट हैव एक्सेस. अगर आप छोटे शहर से आते हो, अगर आप लेट्स से नवी मुंबई से भी आते हो, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू नो कि मैं इन डायरेक्टर से कैसे मिलूँ, इन प्रोड्यूसर के साथ कैसे मिलूँ. आपको फिर कोई एक मैनेजर चाहिए जो आपका काम संभालेगा, लेकिन मैनेजर्स को भी कैसे पता कि वो हर किसी के काम थोड़ी ना संभाल सकते हैं. तो हाउ डू यू गेट द राइट पीपल टू मेक यू मीट द राइट पीपल. एंड दिस मैगज़ीन इज़ वन वे जो बस हर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कास्टिंग एजेंट के ऑफिस में पहुंच जाता है. एंड आप कभी ना कभी तो वो मैगज़ीन देखोगे ही क्योंकि आपके ऑफिस में पड़ेगा. सो दिस इज़ अ ग्रेट कॉन्सेप्ट एंड अ ग्रेट वे. एंड जैसे मैंने सुना है इनका बिजनेस मॉडल, क्योंकि मैं भी ये वंडर कर रही थी व्हेन आई वाज सीइंग द मैगज़ीन कि हाउ आर दे गोइंग टू मोनेटाइज ऑन इट. बट सर इज़ अ वेरी स्मार्ट बिजनेसमैन, so they have figured out exactly how to monetize on this. But of course this is a long-term prospect. This is a prospect where you will see the fruition of it in a couple of years time. उससे पहले तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही है, which is a very brave thing to do in any business. आपके ज़हन में हमेशा जी कवर के लिए तो शी ऑलरेडी टू कवर सो मेनी टाइम्स. बहुत आपके ज़हन में हमेशा से. हाँ बिल्कुल, हमने बहुत अप्रोच करने की कोशिश की. उनका टाइमिंग और ये सब हमें मैच नहीं कर पा रहा था. तो फिर कल का फंक्शन डिसाइड हुआ. देन अनफॉर्चुनेटली ये न्यूज़ आया तो हमने कल पोस्टपोन किया. फिर हमने रिक्वेस्ट किया क्योंकि उनका दिल्ली में शो था कहीं, तो उन्होंने फिर वहाँ कैंसिल किया कि नहीं वो दिल्ली का देखेंगे बट आप कल का मैनेज करो. देन तो जैसा हमने सोचा था उससे ज़्यादा अच्छा कॉपरेशन मिला हमको. एंड
she supported us. अरे दे दो ना, फायदा क्या हुआ फिर? मैम योर मैम योर सोल ऑफ हाँ जी बोलिए। मैम काफ़ी वक्त से आप इंडस्ट्री में हैं, तो एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म के बारे में कुछ जानना चाहूँगा कि जब से आप आई है तो ऐसा मेमोरेबल एक्सपीरियंस बताइए किसी जर्नलिस्ट के साथ जब इंटरव्यू किया होगा आपने, क्या ऐसा नॉट सो मेमोरेबल एक्सपीरियंस वो बताइए कि क्या कहना चाहेंगे? देखिए मुझे नॉट सो मेमोरेबल एक्सपीरियंस इतने ज़्यादा मतलब मुझे हुए ही नहीं है आई थिंक। और मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस बहुत हुए हैं बिकॉज आई फील वेरी लकी जर्नलिस्ट्स हैव बिन काइंड टू मी, they have been more kind to me than otherwise. So I have great respect for our entertainment journalists. I've had a great relationship with them over the years. Minishaa, you would be the face of the magazine, or how would you be associated? Like, whenever they need you, and what kind of a So whenever they need me, of course, I am here for them. Today was a launch event and they had gotten in touch with me and said, this is the concept of it. Does it work for you? Do you like it? And I said, great, I'm on board. I'll come launch your magazine for you and wish you all the best. Sir, I have a question for you. How did you came up with this thought? मतलब इतना creative और इतना sufficient content कैसे आया दिमाग में? एक्चुअली मैंने तो अभी पहले ही बताया बिकॉज आई वॉज ऑल्सो एन आर्टिस्ट, सो आई वॉज बेसिकली सिंगर, क्लासिकल सिंगर। तो बहुत से जगहों पर हम जाते थे। हमारे टाइम में तो इतना मतलब 20 साल पहले ऐसा नहीं था, डिजिटल प्लेटफॉर्म तो अब है। तो बहुत देखा कि टैलेंट होने के बाद भी कई बार प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, कुछ अप्रोचेज होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें। तो फिर हमने ये डिसाइड किया, बहुत साल 15 साल पहले का ये कॉन्सेप्ट है, अभी का नहीं है। So by 15 years I am continuously looking that there is no this kind of platform is not available. Even आप गूगल भी करके देखेंगे बट ऐसा प्लेटफॉर्म कहीं पे मैगजीन के लिए या नहीं है, नए आर्टिस्ट के लिए। अभी तो हम इसके लिए कर रहे हैं, आगे आके फैशन डिज़ाइनिंग में भी जा रहे हैं। इसके आगे जो एडिशंस आएंगे उसमें फैशन डिज़ाइनिंग है एंड ऑल। सो आइडिया आया बेसिकली हमें खुद के अपने एक्सपीरियंस से कि जब नहीं मिलता कुछ प्लेटफॉर्म तो जो टीस उठती है वो बहुत बढ़िया एज आर्टिस्ट। बट हमारे अंदर शायद कहीं एक कलाकार से ज़्यादा एक मैनेजमेंट का पर्सन है, बिजनेस का पर्सन है। देन आई मोल्ड माई सेल्फ इन टू बिजनेस एंड आई रिसर्च इट एंड नाउ दिस रिजल्ट इन फ्रंट ऑफ यू। सर इस मैगजीन में कितनी कैटेगरीज होगी, जैसे फाइनेंस हो गया, फिर नहीं, इसमें ऐसा कैटेगरी नहीं, ये प्योरली एक इंट्रो मैगजीन है जिसमें जितने भी न्यू फेसेस हैं जिनको कभी जैसे मिनिशा ने बताया कि इतने सारे लोगों को प्रोड्यूसर को कैसे अप्रोच करे, सेलिब्रिटीज़ के सामने जाना आसान नहीं है, इतनी सिक्योरिटीज़ हैं एंड एवरीथिंग। ठीक है, ऑनलाइन हम सर्च कर लेते हैं बट अंदर उनके ऑफिस तक जाना इट नॉट पॉसिबल। सो हम लोग एक कंपनी है बेसिकली जो एक तरह से उनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। एनी बॉडी फ्रॉम कॉमन मैन अगर वो भी हमको अप्रोच करेगा सो हमारी टीम जो है कनेक्ट करेगी उसके टैलेंट के साथ एंड कनेक्ट कर देगी डायरेक्ट प्रोड्यूसर एक्ट्रेस के साथ कि यस आप देखिए अगर इनको कुछ चांस दे सकते हैं। सो ये है सो इट इज़ प्योरली एन इंट्रोडक्शन मैगजीन। इसमें कोई ऐसा आर्टिकल कुछ नहीं होगा, ओनली 3 पेजेस विल बी देयर फॉर दिस न्यूज़ ऑफ दिस फिल्म न्यूज़ एंड सम पॉलिटिकल न्यूज़। ओनली 3 पेजेस आर देयर, अदर ऑल पेजेस आर कनेक्टेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द upcoming artists. You were there in Big Boss. Now Kangana का show भी है Lock Up करके। I'm asking you. I don't know about the show. कभी ऐसे एक ऑफर आए तो would you be interested in Big Boss में अपने रियलिटी शो में या OTT anything? नहीं 1 second, वो शो होस्ट कर रही है कि वो She is hosting the show. अच्छा शी इज नॉट अ कंटेस्टेंट ऑफ द शो। ओके ओके, Just like maybe it can like a Big Boss you would say. दिस इज ऑन व्हाट प्लेटफॉर्म और चैनल? It's on Alt Balaji and ऑल्ट बालाजी पर ये आने वाला है, कंगना रनावत जी होस्ट कर रही हैं। and Balaji का हाँ, I heard about this show. MX पे yeah. Okay, but Alt Balaji is doing it, right? Alt is doing it. It's called Okay. Lock Up. Okay. One sec. Excuse me, ma'am. Ma'am, can I just see your tattoo? Yeah, sure. Sure. बताइए मैडम। Where did you get this from? It's from my friend. In India only? Yeah. It's a burning rose. Yeah. That I know. Very nicely done. Nice work. Thank you. Yeah. Really not what it's a good thing because she was there in Big Boss. she's focusing. हाँ. What a work like it. अगर ऐसा कोई आपको अगर कोई ऑफर आए लॉकअप में जाने के लिए रियलिटी शो या I think if the offer comes and the deal works out in 2-3 checkpoints that it would probably need to work out, and then why not?
what are these checkpoints? Like, can you check also? Yeah. Check is must actually. वो तो सबके लिए होता है, आपके लिए भी होता है ना? आपके लिए भी होता है जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, when someone approaches you for a new job, आप पहले ये बोलते हो ना, एक चेकलिस्ट है, लेकिन चेकलिस्ट पे सबसे पहले चेक भी है. So besides that, like, what the checkpoint हो गया, उसके अलावा what? See, I think the very first thing to ask is what is the concept. If I will enjoy doing it, if I think that I would be able to compete well doing it, then that is the first criteria. And then after that, of course, is monetaries and what it should always be your time. Your time and monetaries for it should be a match. एक आखिरी सवाल है कि टैटू आपको बहुत पसंद है जी. हम देखेंगे इन फ्यूचर आपको लाइक ऐसे कुछ डिफरेंट मेरे पास है, I have 1-2 tattoos, लेकिन वो छोटे छोटे हैं. You already have a heart on your hand. Yeah. छोटू सा. There are lots of openings in the OTT act. Yeah. What things are other besides this magazine? और क्या हो रहा है? So there is a show of mine releasing which all Balaji has produced. It's going to release on MX and it is called Cold, Messy, Lonely. So it's a relationship about modern love and it's a relationship how love and today in the modern world can be really messy and complicated and this and that. So this just gives a very real take on that. It's funny. I would call it comedy plus drama. So that's called a dramedy. Yeah, I think that's called a dramedy. So it's a dramedy showing different kinds of love and there are many kind of people with different kinds of relationships. It's not one kind of relationship. It's different relationships and how there are different people who So it's going to be a fun, light show. One last question from my side. हाँ. हमने लता जी को आज श्रद्धांजलि दी. हाँ जी. How would you pay your tribute to her? Or in case if any memories you have with her, yeah, how do you remember? So unfortunately, I have never met Lata ji, never. And but I have always enjoyed ma'am's music, And आज ही मैं उनके गाने सुन रही थी. आज मैं सुन रही थी, मैं गा रही थी, मैं गुनगुना रही थी, just in remembrance. So that is the biggest tribute you can give is by never forgetting. Because with an artist, you will never forget. Their music is... मैं दिलवाले दुल्हनिया की गाना सुन रही थी. Even today it's so beautiful. लग नहीं रहा था कि इतने साल पहले और मुझे फिर लिरिक्स याद आ गए थे और मैं गा रही थी and then फिर मुझे वो याद आया था कि when I saw the film, what I felt. So that will never change with an artist. Lata ji and actors, who've gone in the yesteryears will always be with us. Thank you, man. I wish you all the best. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you all of you. Thank you. all camera people, all press people. थैंक यू गाइस बहुत अच्छी तरह से